Question number 5A2, CA Foundation, September 2025, accounts paper. P owed rupees 2 lakhs to Q. P has to pay to Q. On 1st October, P accepted a bill drawn by Q due amount for 3 months. Now see, this is the problem on bill of exchange. You have to pass journal entries in the books of Q. So it's a very simple sum. Okay, BRS was a very tough. Q offered bill discounted. Q got the bill discounted for 1,98,000 on 3rd October. On 31st December, before the due date must be 4th January, P approached Q for renewal of the bill. Q agreed on the conditions that 1 lakh along with interest at 12% per annum for 3 months on the amount of rupees 1 lakh be paid, and P should accept a new bill for 3 months for the balance amount. Arrangements were carried through on 2nd January 2025. However, ये अरेंजमेंट्स कभी हुआ? 2nd January को हुआ. On 2nd April, before the due date, P became insolvent and only 40 paisa of the bill could be recovered from his estate. So अभी क्या problem है? First you have to do only journal entries in the books of Q. So you'll make proper columns. Now first is journal of Q. P has to pay money to Q. P accepts a bill and P will give the bill to Q. So 110/24 क्या है? बिल आया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2 lakhs to P account. This will be a first entry. P is the giver, P ceases to be debtor, being bill of rupees 2 lakhs due after 3 months, drawn by P, accepted by P. फिर क्या हुआ?
Q got the bill discounted for 1,98,000 on 3rd October. So 3rd October 2024, what will be the entry? बैंक में पैसा आएगा, Q is going to the bank, 1,98,000 मिलेगा. डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना? 2000 to 2 lakhs. Then on 31st, now the bill is with the bank, no? On 31st December, before the due date, Q approached for the renewal of the bill. Q agreed. Q ने बोला भाई मुझे अभी 1 लाख दे दे और इंटरेस्ट भी दे on the amount of rupees 1 lakh to be paid, and P should accept a new bill. अब देखो ये क्या है, ये रिन्यूअल की कहानी है. रिन्यूअल में क्या था? पहले भी ओल्ड बिल रुपीज 2 लाख. इसके दो पार्ट्स पड़ेंगे, कैश पेड and balance. Cash paid is 1 lakh and balance is also 1 lakh. अभी interest is rupees 1 lakh into 12 by 100 into 3 by 12 is equal to rupees 3,000. Okay? Interest कितना होगा? 3,000 rupees है कि नहीं? अब ये 3,000 यहां पर देने का है. ये पहली बात तो बता दूं, ये जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है ना, वो ये वाला 1 लाख है. कौन सा वाला? जो पे नहीं किया उस पे इंटरेस्ट होता है. समझ में आया? हाँ. Okay, so first when you pass entry for interest renewal, first is your bill will be dishonored, and see here he approached on 31st December. The new arrangements were carried on 2nd January. ये 2nd January को ये लोग ने ये सब काम कर दिया. तो पहले तो क्या होगा, ओल्ड बिल विल बी डिसऑनर्ड. तो P account debit and the bill is with bank. P account debit to bank 2 lakhs. P account debit to bank rupees how much? 2 lakhs. Being bill cancelled, being bill cancelled on request of P. P ने बोला बिल छोड़ दे. Then you will charge interest first. 2/10 नहीं, 2 January. You will charge interest. तो क्या एंट्री आएगी? Interest account debit to bank account. Interest account debit, no, sorry. P account debit to interest account 3,000. So now we have to take 2,03,000 from P, being interest charged on P on rupees 1 lakh at the rate of 12% per annum for 3 months. इंटरेस्ट चार्ज किया, आप पैसे ले लो.
पैसे ले लो, क्या एंट्री आएगी आपकी, क्या एंट्री आएगी आपकी, पैसे ले लेंगे तो आप, पैसे ले लेंगे हम तो हमारी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, या बैंक अकाउंट डेबिट 2 P अकाउंट, नहीं कैश अकाउंट डेबिट, और नया बिल बनेगा कितना, कैश अकाउंट ही विल गिव 1,03,000 माय डियर, है ना, और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख, 2 P अकाउंट 2,03,000, being cash and bill due after 3 months accepted by P। तो रिन्यूअल हो गया, आपका पैसा आ गया। अब क्या हुआ कि ये तो 3 महीने बाद था, मतलब अप्रैल में होना चाहिए था, 2 जनवरी को हो गया, 5 अप्रैल को ड्यू है 3 महीना, है ना। ऑन 2 अप्रैल बिफोर पी बिकेम इंसॉल्वेंट, सो पी बन गया क्या, इंसॉल्वेंट। बिल कितने का है, 1 लाख का है, तो 2/4/2025 P became insolvent, so एंट्री क्या आएगी, P अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख, being bill dishonored on insolvency of P, and then 2/4/2025 he is giving 50%, 50 पैसा in a rupee। तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट सिर्फ 50,000 नहीं, कितना मिल रहा है, 40 पैसा इन रुपी, तो 40,000 मिलेगा, और लॉस कितना होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू बिल रिसीव, नहीं, टू पी अकाउंट 1 लाख, being 40% of amount due received on insolvency of P in full and final settlement। खत्म, फॉलो दिस। तो पहले बिल ड्रॉ किया तो बिल मिला हमको, हमने डिस्काउंट किया, फिर वो रिन्यूअल के लिए आया, रिन्यूअल में 3 एंट्री आ गई, डिसऑनर की, इंटरेस्ट की, और वसूलने की, पैसा रिकवरी की, ये हो गया। फिर नया बिल डिसऑनर हुआ, तो टोटल मिला के 6-7 एंट्री का गेम है ना, ओके। 7 एंट्री का खेल, समझा तो पास, नहीं तो फिर इसमें आपको बीआरएस में बहुत टाइम लगा, पर ये अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट करते तो इजी हो जाता।